हेलो गाइस एंड गर्ल्स सो लॉन्ग टाइम नो सी एंड आई फेल्ट कि शायद आपको ऐसा लग रहा होगा कि पता नहीं या तो मुझे कुछ हो गया है इस सिचुएशन में। वही आता है पहले दिमाग में। और सेकेंडली या तो मैंने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ यूट्यूब डिस्टेंसिंग भी कर ली है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एंड जो लोग यहाँ पे पुराने हैं उन्हें पता होगा कि मैं क्या बोलने वाली हूँ आगे। सो नो सरप्राइजेज एट ऑल। ऑफ कोर्स मेरे ऑफिस वर्क ने फिर से टोल ले लिया मेरी लाइफ पे। But I'm very happy to say that I've done something useful at least. And I mean, मैं बहुत खुश हूँ. I mean, the client was very happy with the work and ultimately आप जिस चीज़ के लिए काम करते हैं, अगर वहाँ के लोग खुश होते हैं, आपको अप्रिसिएशन देते हैं कि आपने जो किया दैट इज यूजफुल, तो आपको खुद में भी बहुत खुशी होती है। अल्टीमेटली वाई डू वी वांट टू एंटर इनटू सिविल सर्विसेज? बिकॉज हम चाहते हैं कि हमारे काम से कुछ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हो लोगों के लिए। तो आज तक मैं जब भी काम करती थी आई नेवर फेल्ट दैट इम्पैक्ट एंड दैट इज वाई समवेयर आई यूज टू ऑलवेज फील दैट वॉइड कि जो मैं कर रही हूँ उसका ज्यादा रेलिवेंस नहीं है फॉर अ कॉमन मैन। बट इस बार के काम के बाद when the client said that the people of the state will remember you or something, I know that was just a sweet gesture, लेकिन I mean it felt really good and मुझे लगा कि चलो फिर I mean अगर मैं कुछ मिस कर रही हूँ कहीं ना कहीं, I made 2 videos, प्लान्स बनाए मैंने। फर्स्ट प्लान में मैं फेल हुई, सेकंड प्लान मैंने बनाया फिर से अपडेटेड, वहां भी मैं फेल हो गई। तो ऑब्वियसली इसके बाद एक डिमोटिवेशन तो हो ही जाता है। इट्स लाइक वेरी वेरी, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट हियर। जितने भी मैंने पॉजिटिव बातें की हो चैनल पे या मैं बोलती हूँ, लेकिन उसमें मैंने एक चीज भी आप लोगों को बोली है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ऑनेस्ट, लाइक एंड आई डेफिनेटली विल एक्सेप्ट दैट येस आई फेल्ट डिमोटिवेटेड पुटिंग अप अ कंटेंट ऑन माय चैनल, बिकॉज मुझे लगा कि मैं किस मुंह से उठ के जाऊं और बोलूं कि आप प्लीज मेरी ये बातें सुनो। तो मुझ में मैं वो irresponsible टाइप नहीं हूँ honestly, and that is why I feel responsible when I say something, and I said twice and I failed. But then I realized that if we are working for a bigger purpose in life, there will be situations where we are going to fail. So if I like learn how to accept failure at this point of my life, I think it will be very great, because बाद में फिर अगर मैं बहुत बड़े बड़े पॉइंट्स पे फेल हो गई आफ्टर आई गिव ऑल ऑफ माई बेस्ट एफर्ट्स, तो एटलीस्ट मैं ब्रेक डाउन नहीं करूंगी एंड आई हैव द कैपेसिटी टू गेट बैक अप। एंड ऑनेस्टली आई रियली फेल्ट कि लाइफ में किक मी 7 times बट आई गेट अप 8th। सो या, आई बिलीव इन दैट प्रिंसिपल डेफिनेटली। एंड इसीलिए मुझे लगा कि मैं लक्ष्मीकांत का एक वीडियो अपलोड करने वाली थी, लेकिन मुझे उसके पहले लगा कि पहले थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। ये जो सिचुएशन है आज के टाइम में, इट इज वेरी सेंसिटिव एंड अनसर्टेन काइंड ऑफ। एक डर है, एक अनसर्टेनिटी है, लोगों को पता नहीं है क्या करना है, क्या होगा आगे, nobody knows. So I really felt that ये जो सिचुएशन है आज के टाइम में, so what is actually happening to us because of all this? Like, that is the question for today, that is the pandemic taking or making the best of you? Both things can be. It's like the situation where the glass is half full or half empty. तो एक तरीका होता है एक चीजों को देखने का, इसीलिए हम लोग वो ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक वाला एग्जाम्पल लेके आते हैं, वो हाफ फुल और हाफ एम्प्टी ग्लास वाला। कि जो ऑप्टिमिस्टिक होता है, जो पॉजिटिव साइड पे देखना पसंद करता है, वो इंसान हमेशा ये सोचेगा कि द ग्लास इज हाफ फुल। बट द पर्सन हु इज पेसिमिस्टिक, जो निगेटिव साइड ऑफ थिंग्स पे देखता है, उन्हें हमेशा लगेगा कि द ग्लास इज हाफ एम्प्टी। सो इट्स ऑल अबाउट द व्यू पॉइंट, आप किस नजरिए से चीजों को देखते हैं। And however philosophical all this sounds, I know that practical situation may there will be moments when you feel like breaking down. I broke down so many times, and like recently कुछ दिनों पहले आई रियलाइज दैट एक दो दिन पहले आई फेल्ट कि आई एम नॉट इन अ गुड मेंटल स्टेट, लाइक मैं बहुत जल्दी ब्रेक डाउन कर जा रही हूँ। सो आई फेल्ट कि दिस इज नॉट the right me. I mean, I cannot do this. So then I had to think ki how will I make this situation better? I mean, I cannot do this forever, or I cannot repeat this what I did. So I felt that first of all I need to calm down. Okay, whatever is happening, like maybe my work schedules are going haywire sometimes, and I really had to work like till
12 a.m. from, like, starting from the morning till the night, and it was continuous, and it was torturous because it was like, continuous calls, follow-ups, and I had to do it all alone. You're not in an office environment, and I was the one responsible for the implementation. So, it was all about me following up with everyone. So it kind of, becomes hectic when you are the responsible person. You need to talk with everyone that if everything is going fine, or if anything is not going fine, then what you need to do of that. So yes, it took a toll on me, and honestly I was not in a very good state of mind. And health की तो मैं नहीं बोल सकती, लेकिन mind was definitely not, working in the right direction. So then I realized that, you know uh, this is all about what we, make of the situation. I mean, अगर हम अच्छी चीज़ों के साइड में देखें, तो मैं अपनी लाइफ में कभी इमेजिन नहीं कर सकती थी that after, I joined an organization, after I, मैं एक ऑफिस ज्वाइन करने के बाद I would stay 24/7 with my family, which I'm doing right now from last 1 month. So I felt कि यार इससे अच्छा टाइम नहीं हो सकता, अगर आप देखो उस तरीके से तो. This is like my side of the story. You may not be, staying with your family, and you may be alone, तो आपको ये सुन के बुरा लगेगा, I understand that. लेकिन वही मैं बोल रही हूँ, आपके पास भी कुछ अच्छा होगा सोचने के लिए, वो आप ही डिसाइड कर सकते हो. आई एम नॉट सेइंग दैट, यू नो हमारी सिचुएशन सिमिलर होंगे, किसी की सिचुएशन किसी और की सिचुएशन से अलग होगा. ओके, बट इट इज ऑल अबाउट, यू नो योर व्यू पॉइंट ऑफ द सिचुएशन. लाइक, मैंने आज एक कुछ पिक्चर देखा था, उसमें मैंने किसी एक बच्चे की स्टोरी पढ़ी हु लाइक स्कोर्ड लाइक 99 और 98% इन 10th एंड 99.2% इन 12th. एंड दैट गाय वाज वेरी पुअर, और उनके पापा को पैरालिसिस अटैक हो गया था. ही इज ऑन बेड, ही वाज अ कंस्ट्रक्शन वर्कर पहले, and that boy is aspiring to be a civil servant in the future. और उस लड़के ने कहा था कि sometimes, वो और उसकी बहन को टॉर्च लेके पढ़ना पड़ता था. they didn't have electricity घर पे, और वो बोलते थे कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उसको उसी चीज से हुई थी. तब मुझे रियलाइज हुआ कि, वी आर इन सो मच गुड सिचुएशन एंड सो मेनी ऑफ, मतलब कितने सारे लोग हैं जिनके पास हमारी जितनी भी सुविधाएं हमारे पास है, मेरे पास कुछ होंगी, आपके पास कुछ और होंगे, या कम होंगी मुझसे या किसी और से, लेकिन जितना भी होगा वो किसी और के लिए शायद बेस्ट हो. तो ये चीज आपको रियलाइज करनी पड़ेगी दैट योर वर्स्ट मे बी समवंस बेस्ट. सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ यू थिंक ऑफ द सिचुएशन. इट इज, आप अगर अपनी अच्छी चीजों पे फोकस करें, दैट यू हैव फूड, you have someone, a friend or a family member who you can talk to when you want to, or anybody, anything. I mean, there is something everybody has which they can think positively about. So it is all about what you have. Maybe that single person in the world whom you look up to, or who loves you, or anything, just a cat or dog, anything in the life, uh, just food on your plate. It can be anything. So I'm just saying that don't let this pandemic take the best of you. Okay, you need to convert the situation to make the best of you. Think on the things you would have never thought if you would be occupied with your previous life. Like, आज के टाइम में अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, तो फिर मैं आपके शेड्यूल पे कमेंट नहीं कर सकती. लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं फुल टाइम, तो आपके पास कुछ भी करके थोड़ा तो ज्यादा टाइम होता ही होगा, बिकॉज नॉर्मल सिचुएशन में आप कुछ ना कुछ करके कहीं ना कहीं तो टाइम वेस्ट करेंगे ही. ठीक है, मे बी आप अभी भी वो टाइम वेस्ट कर रहे हो, दैट इज fully your call. But what I feel is every, like, हम सबके पास कुछ ना कुछ extra है because of this pandemic. Maybe sometimes the responsibility, sometimes the work also, वो भी extra आ जाता है. But I'm just saying, I mean, the good things can also be extra, right? तो मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ that this pandemic can do anything to you. I'm not talking about actual जो problems होने वाली है इस pandemic की वजह से. No, if you are well, healthy, if you're not like, touch wood, sick or something, then also this pandemic can take a toll on many people's lives, and that is why we are hearing so many cases. You obviously know what I'm talking about. So people are getting depressed and many things. So this is very important.
that you ask this question to yourself, that is the pandemic taking or making the best of you? And if it's taking the best of you, you need to stop right now. Just make bullet points of whatever you're doing wrong right now, and उसके बगल में आप उसका solution लिखो. ठीक है, कि ये अगर मेरे साथ हो रहा है, ये मैं अगर गलत कर रही हूँ, तो इसको सही कैसे करना है. क्योंकि जो गलती हम करते हैं उसको सुधारने का पॉइंट भी हमारे पास खुद ही होता है. ठीक है, अगर आप फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो, देन find a way to reduce that frustration. If you feel that you're wasting your time, when you're studying, or if you're not like giving your whole attention to that, then find ways to increase your attention, increase your focus, maybe do some exercise or whatever. Just find a way about that. And it is very important that these, whatever you write, the bullet points are honest. I mean, don't hide something from you yourself. अगर आप नहीं कर रहे हो अच्छे से पढ़ाई, तो लिखो उस चीज को. Until and unless you are not stating your fears or difficulties or your problems, you will never be able to solve them. So this is very important that you just write down whatever you're doing wrong right now. Okay, और आप सही से नहीं कर पा रहे हो, उन सारी चीजों को लिखिए, और फिर उसके बगल में आप अपना रेजोल्यूशन लिखिए. Write this, stick it in front of you. This is an important exercise. अगर आपको ऐसा लगता है कि आप भूल जाओगे, आप फोकस लूज कर दोगे, like I have not written and pasted, to be very honest. लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आप फोकस लूज कर सकते हो, आप फिर से कल सेम चीज कर सकते हो, then please do that. Okay, like I am a soft copy person, तो मेरा हर कुछ सॉफ्ट कॉपी में होता है. मुझे कुछ लिखना भी होता है तो मैं वहीं पे लिखती हूँ, उसी को देखती हूँ, and it works fine for me. So find your way. If you are a soft copy person, go with that. If you're a hard copy person, go with that. Whatever works best for you. But ultimately, you should make the best of this time, whatever you're getting. Be it with, a small conversation, a phone call, every day, 5 to 10 minutes with your family, or, more than that actually. 10 minutes काफी कम होते हैं, but still. कुछ भी, कोई भी अच्छे लोग जिनके साथ आप कम्युनिकेट करना चाहते थे, आप नहीं कर पाते थे, तो आज के टाइम में आप जो भी थोड़ा बहुत टाइम सेव करते हो, आप उसको किसी और ऐसी चीज में लगा सकते हो. नॉट नेसेसरी कि आप पढ़ाई कर रहे हो. ओके, बिकॉज सी एवरीथिंग वर्क्स क्यूमुलेटिवली. अगर आप अच्छे मेंटल स्टेट में हैं, फोकस्ड हैं, एनर्जेटिक हैं, तो आपकी जो पढ़ाई की क्वालिटी भी होती है वो इंप्रूव हो जाती है. मे बी यू वुड बी सिटिंग फॉर 6 hours पहले, बट if right now you put that 6 hours, maybe your output is triple of what you were doing before. So focus on the output. It is not about always the quantity of hours. Obviously, if you're preparing for civil services, quantity and quality both is important. And I have messed up both recently, but yeah, I'm getting back up there. So same way, you also need to get back up. Whatever in, like, maybe आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही थी, but you are screwing up your health or your mental state or your relationships with family, friends, everyone. So make that up. Be happy, be cheerful. आप अपने लोगों से बात करिए, खुश रहिए. जो भी चीजें आपको चाहिए अपनी खुशी में इंक्लूड करने के लिए, आप उन चीजों को करिए. ठीक है, और अगर कुछ नहीं भी मिल रहा हो, तो जो मिल रहा है उसकी तरफ देखिए. ठीक है, इट मे नॉट हैपन कि हर जो चीज आपको चाहिए वो भी आपको मिल जाएगी. और आज के सिचुएशन में तो डेफिनेटली ये सोचना नहीं है हमें. ओके, सो थिंक व्हाट यू हैव, और वहां से हम कैसे खुश रह सकते हैं, एंड देन मेक योर पॉइंट्स. ऐसे अनरियलिस्टिक पॉइंट्स नहीं बनाना है कि मुझे घूमने जाना है, ट्रैवल करना है. नॉट ऑल दैट. Whatever you can do right now, only those resolutions should stay in your bullet points. Okay, आपको super depressed नहीं होना है उसको, आपको optimistic होना है उसको बना के. Okay, so yes, this was all I wanted to talk about. I just wish कि this is helpful for someone who is listening to me, and that is all I wanted to talk about. और हाँ, पढ़ाई वाले videos आने वाले हैं, लेकिन उसके पहले मुझे लगा एक वार्म अप और एक बातचीत हो जानी चाहिए हमारे बीच, कि आप लोग सही से हैं कि नहीं, और अगर नहीं है तो कैसे वापस सही होना है. ओके, बिकॉज दिस इज व्हाट आई डू टू माई सेल्फ, एंड वी ऑल आर टुगेदर इन दिस जर्नी. ओके, so take care, and I'll see you in the next video. Bye bye.